Today we will discuss about vector addition. Vector addition. We add two vector y, triangle of vector addition or parallelogram of vector addition. Triangle law of vector addition. If two vector represent the two adjacent sides of a triangle, then third side will represent the resultant of two vectors. Let vector A and vector B are represented by two adjacent side of a triangle. ये ABC ट्रायंगल है, ये थर्ड साइड, ये इसको वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको वेक्टर बी से, देन ये जो होगा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बाय triangle law of vector addition, AB vector plus BC vector equal to AC vector, vector A plus vector B equal to vector R। यहाँ पे देखिए ए वेक्टर का यहाँ टेल है, यहाँ हेड है, बी वेक्टर का यहाँ पे हेड टेल होना चाहिए, बी वेक्टर का टेल वेक्टर ए के हेड पे होना चाहिए, तब जो टेल हेड होगा वो हमारा रिजल्टेंट होगा। ये टेल हेड इक्वल टू टेल हेड, ये टेल हेड जो होगा वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ध्यान देना, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल होना चाहिए, तब फर्स्ट वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का हेड जो होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर देगा। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, magnitude of
सिंपली आर लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड। थर्ड साइड का जो लेंथ होगा एसी का वही हमारा दोनों वेक्टर का। वेक्टर आर इक्वल टू एसी हो जाएगा, इसको मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं। इसका फॉर्मूला आता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हम प्रूफ कर देते हैं। ड्रॉ परपेंडिकुलर डी, ड्रॉ परपेंडिकुलर CD to AB in triangle BCD। लेट इसको थीटा एंगल लिए हैं इन ट्रायंगल BCD where theta is angle between वेक्टर A and वेक्टर B। देखिए वेक्टर B को A को यहाँ पुट कीजिएगा, दोनों का वेक्टर A का टेन यहाँ जाएगा, हेड यहाँ आएगा, तो वेक्टर A और वेक्टर का बीच B का एंगल थीटा है, यही एंगल थीटा आएगा इन ट्रायंगल BCD। ये इसका लेंथ B है, तो CD इक्वल टू DD इक्वल टू D cos थीटा और CD इक्वल टू D sin थीटा। तीन राइट एंगल ट्रायंगल ADC R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। AD कितना हो जाएगा, AD AB प्लस BD, तो ये साइड A है, ये है D cos थीटा और ये है D sin थीटा। A प्लस D cos थीटा और स्क्वायर प्लस D sin थीटा और स्क्वायर, A स्क्वायर D स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट। इसको दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2ab cos थीटा। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल गया। डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। ये एंगल अल्फा लेते हैं, तो tan अल्फा इक्वल टू इन ट्रायंगल ADC tan अल्फा इक्वल टू CD बाई AD B sin थीटा बाई A प्लस B cos थीटा। अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स B sin थीटा बाई A प्लस B cos थीटा। R वेक्टर इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर 2ab cos थीटा इन डायरेक्शन ऑफ अल्फा डिग्री in anti-clockwise direction with vector A।
ठीक है। resultant vector, we can find resultant vector by this method. We directly use formula for finding magnitude by knowing the magnitude of vector A and vector B and angle between vector A and vector B. Then we directly find resultant vector, and by the diagram we can find, we use this formula for finding angle alpha, and resultant is given as following. Now we discuss a problem for finding resultant. A man travels 2 meters due east and then moves 3 meters and 30 degrees east of north. Find the resultant displacement. Here we have attention that first displacement is 2 meters due east and second displacement is 3 meters and 30 degrees east of north. This is magnitude and this is direction. We have to find resultant displacement. We know displacement is a vector quantity, so we add these two displacement by Tangle law vector addition. First of all, we draw direction in plane east, north, east, west, north, south, each direction. This is origin. We take origin at a starting point. We also draw this direction at any point, whenever we require. So first of all, 2 meters due east. We are starting from this point and take 2 meters due east over here. D1 vector. This is, and then 30 degrees east of north. 30 degree from north to east, 30 degree. It means 60 degree from east to north. So then we can also draw simply east, west, north, south, east, west. 30 degree. North of east. On drawing figure, we go in reverse direction. North of east, 30 degree. North of east, 30 degree. This means this angle is 60 degree. 3 meters. Then find displacement. Tail head, then tail head is our resultant. This is our resultant displacement. D1, D2. The D vector equal to D1 vector plus D2 vector. Here we have to find angle between vector and vector B. 30 degree is not the angle between vector A and vector B. We replace vector A at point D1 vector at this point, then the tail of D1 vector and D2 vector is this point, then angle between them is, the smallest angle is 60 degree. Angle theta equal to 60 degree. Angle between D1 vector and D2 vector. 60 degree. Resultant is simply find by formula A square B square 2AB cos theta. Here vector A is
d1 and vector d may be d2. d1 square plus d2 square plus 2 d1 d2 cos theta. 2 square 3 square plus 2 into 2 into 3 into 1 by 2. 4 plus 9 plus 6 under root 19 meter. Now we can find direction. Alpha equal to b sin theta by a plus b cos theta. d2 sin theta by d1 plus d2 cos theta. d2 3 sin theta root 3 by 2 by 2 plus 3 into 1 by 2. 3 root 3 by 7. Alpha equal to tan inverse 3 root 3 by 7. So we write finally answer. Vector r equal to resultant displacement equal to under root 19 meter in alpha degree north of east to north alpha degree angle. There alpha equal to tan inverse 3 root 3 by 7. This is our final answer. Let us try to understand. A man starting from this point, let 2 meter moving due east and then moves 3 meter in 30 degree east of north. This is direction for d2 vector and magnitude 3 meter. 30 degree east of north. So in drawing figure, north of east, V goes from reverse direction. North to east 30 degree, 3 meter. This is direction and magnitude 3 meter. Then OAB triangle formed and OP vector is the resultant vector because condition is followed. Tail head equal to tail head. This is our resultant vector. We simply find formula. We find magnitude by same formula and direction by also formula. This angle alpha, here we should remind that this angle is angle from first vector. This angle is angle from first vector in anti-clockwise y direction. Here we discuss a result when two vectors are oriented at single point at an angle theta. Then what is resultant and in which direction? Two vector of equal magnitude. That two vector vector A and vector B of equal magnitude
are oriented at an angle theta with respect to each other, then we have to find resultant vector. Vector A, vector B. This is angle between vector and vector B. So we have to find direction of resultant and magnitude of resultant. We replace vector B. This angle is theta and this line is parallel to this line. So this angle is also theta. Magnitude, the length is same. So this vector is B. Hence this vector is also B. Because two vectors are parallel, the direction same and magnitude, length same, magnitude same. This vector is the resultant vector. This vector is resultant vector. Now we find magnitude under root a square plus b square plus 2ab cos theta. Vector A magnitude, vector B magnitude given. So A equal to B. A square B square 2a square plus 2a square cos theta root 2a under root of 1 plus cos theta. One plus cos theta, 2 cos square theta by 2. By mathematics, cos 2 theta equal to 2 cos square theta minus 1. So cos 2 theta plus 1 equal to 2 cos square theta. So cos theta plus 1 equal to 2 cos square theta by 2.